Fluid mechanics, it has the two parts, fluid statics, that is also known as the hydrostatics or hydrodynamics. Hydrostatics means the fluid is at rest in a container. Hydrodynamics means it is the discussion of flow of fluid in a pipe. Means when the liquid is flowing, any fluid is flowing through a pipe, through a canal, through a river, whatever. So we will first talk about the fluid at rest, the pressure at the different points. The fluid is at rest means fluid inside the container and container is at rest. So what was the pressure at the point A and pressure at the point B? The pressure at the point A because of the atmosphere over it. So it is known as the atmospheric pressure. The value is 1.01 10⁵ Pascal. 1 Pascal is 1 Newton per meter square. And whereas the pressure at the deeper point, H depth below the water or any of the liquid or any of the other fluid, there is additional pressure because of atmosphere and one additional pressure because of this part of the fluid only. And this part is H. This part has H depth and density is rho. So what is the extra pressure? Additional pressure, additional to this atmospheric pressure, rho GH. This is the additional pressure to this atmospheric pressure about it. हम सभी पे जो प्रेशर कंटिन्यूस प्रेशर है इक्वल प्रेशर से, and that is atmospheric pressure. Atmospheric pressure को हम measurement करते हैं barometer से. Barometer is a device to measure the atmospheric pressure. और यहीं से हमें समझ में आता है कि अच्छा ओके atmospheric pressure की वैल्यू कितना हो जाता है. It is the rho GH, where rho is the density of the mercury here. ये mercury होता है, हमने यहाँ पे fill कर लिया था mercury को, फिर यहाँ पे inverted कर दिया था mercury, धीमे धीमे उसके लेवल कम हो गया, बिल्कुल वर्टिकली रखा था कि कोई भी एयर पार्टिकल इसके अंदर नहीं जा सका. अगर इसमें एयर बबल्स आ जाते तो हम समझ आते थे कि अच्छा यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, कुछ एयर है. एयर बबल्स नहीं फॉर्म हुए हैं, इसका मतलब है देयर इज अ वैक्यूम, मींस देयर इज नथिंग अबव इट, देयर इज अ जीरो प्रेशर, नो प्रेशर here. But here is the pressure. There is nothing above it, so no pressure. But here is the pressure. This pressure at this point, the pressure is because of this part of the mercury. And at this point, because of the atmosphere. Atmosphere is about 200 kilometers above the Earth's surface. और दोनों को both at the same level in a fixed, in a closed, in a container. ये सब ये कंटेनर का पार्ट ही है, तो ए पार्ट हो, ये पॉइंट हो या बी पॉइंट हो या सी पॉइंट हो. Okay, at this point the pressure at A, pressure at the B and pressure at the C should be the same. Means same level, same pressure. Same level, same pressure. In a hydrostatics, when the container is at rest, same level, same pressure. Yes. But at this point, the pressure is because of the mercury. At this point, the pressure is because of the atmosphere. But both are equal. So what about the atmospheric pressure? Because of the pressure due to the mercury. What is the pressure because of the mercury? Rho of mercury, G into H. Rho GH. So we got it. Force upon area, weight of mercury, area, volume, area, rho GH. You got it, rho GH. Density of mercury is 13.6, 10⁻³ kg per cubic meter. Value रख दिया, you got the value 1.01 10⁵ Newton per meter square. Yes. Similarly, we have a manometer. Manometer is a device to measure the pressure inside the closed container, and the container is filled with the gas. So again, we take a flexible U-shaped tube, and we fill the mercury
जब शुरू में मरकरी को फिल करते हैं तो हो सकता है कि मरकरी लेवल ऐसे ऐसे यहाँ तक हो जाए, इक्वल लेवल मरकरी, लेकिन जैसे इस नॉब को ओपन कर दिया, इस प्रेशर की वजह से मरकरी थोड़ी नीचे आ गया और ये लेवल जो यहाँ पे था ये ऊपर चला गया। इस तरह से दोनों ही आर्म्स में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी आ गया। सो दिस इज मर्क्यूरी, दिस इज मर्क्यूरी हियर। इस आर्म्स और इस आर्म्स के बीच में जो लेंथ डिफरेंस है, जो हाइट डिफरेंस है, दैट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन दिस वन, पी नॉट। एक तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे एक्सर्ट कर ही रहे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस? The atmospheric pressure P naught plus rho of mercury into GH. This H, this is the H, extra level, extra height in another arm. And this extra level pressure is also known as the gauge pressure, rho GH. This is known as the gauge pressure. It is the gauge pressure. It's the gauge pressure, yes. अब आगे देखें। तो इस तरीके से हमने दो डिवाइस देख लिया था, मैनोमीटर और बैरोमीटर, और इन दोनों की वजह से हमने प्रेशर मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देख लिया। तो प्रेशर के बारे में जानकारी होगी कि भाई प्रेशर ऐसे मेजरमेंट किया जा सकता है। अब हम इसको यूज करते हैं। अब नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रेशर, कैसे कैसे प्रेशर्स की वेरिएशंस देखना है अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट केसेस में। एक केस तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देख लिया, सेम लेवल सेम प्रेशर एंड डिफरेंट लेवल डिफरेंट प्रेशर्स। डिफरेंट लेवल डिफरेंट प्रेशर। कितने प्रेशर? रो जी एच। वंस अगेन फिर से देखें यहाँ पे, so there is a container is filled with some liquid and we are just choosing different levels. So there is one level here, suppose this level is called M and this level is called N. The density of the liquid is rho. So what is the pressure difference, and at which point the larger pressure will be? At the N point larger pressure or at M point? Your answer should be N point. Yes, of course. N के ऊपर में ज्यादा लोड है, ज्यादा प्रेशर होगा। M के ऊपर में कम लोड है, कम प्रेशर है। Okay, because of pressure means the force upon area, obviously. So we are just talking about the different levels, the different level, different pressure in this situation. So we have the different level, different pressure. Different pressure, so pressure difference. So what is the pressure difference? Pn minus Pm. Brightness Pm minus Pn. Pn minus Pm, sorry. Okay. So this is the called pressure difference. And this should be, of course, अब समझ में आ गया कि pressure difference कितना होना चाहिए. Because of this height only. इनके लिए बस यही height responsible होगा. This extra height is responsible. So what is the pressure difference now? It is the rho GH, isn't it? If you want to get the pressure at the point M, तो आप M point पे ही pressure देख सकते हो, but उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि M point कहाँ पे है इस level से। हम ऐसे भी indicate कर सकते हैं ना? Yes, we can indicate like this one. ऐसे कर लें। Suppose ये यहाँ से ये YM बोल देते हैं इसको, और इसकी जो डेप्थ है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसको YN बोल देते हैं। यहाँ तक के लिए YN बोल देते हैं। तो अब मैं बात कर सकता हूँ इसके ऊपर में, एंड व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट? तो देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे।
free surface. So what was the pressure at the point N? We will say it is P naught plus rho G yn, isn't it? And what is the pressure at the point M? It is the P naught plus rho G ym. So similarly, what is the pressure Pn minus Pm? P naught is cancelled. P naught is cancelled. So simply we got that it is the rho G yn minus ym. And this ym minus yn is h. है ना? This is the h. So simple, बड़ा simple है ऐसे. Simple and natural. More level, more pressure. ज़्यादा level, ज़्यादा load होंगे, more depth, more pressure. ज़्यादा depth होगा तो ज़्यादा pressure होगा, कम depth होगा तो कम pressure होगा. ज़्यादा depth है, more depth means high load, less depth, low load. Very simple. चलिए हो गया. तो नंबर 1 डिफरेंट लेवल डिफरेंट प्रेशर्स पे हमने यहाँ पे बात किया. इसमें हमने एक केस बात किया यहाँ पे. नंबर 1 ए बोल देते हैं. केस ए. The container is at rest. Container is at rest. पार्ट ए में हमने देखा कि भाई कंटेनर जब रेस्ट में है तब ऐसा हुआ था. नाउ पार्ट बी. When container is accelerated, now container is accelerated. Container is accelerated. It is accelerated vertically upward. It is accelerated vertically upward. Okay. तो मैं इस कंटेनर को vertically upward accelerate करा देता हूँ अभी. And we will look for the same result. Means the pressure difference at the different levels. It's filled with the liquid. कोई liquid इसमें fill कर दिया हमने. Again we have 2 points. One point is M, other point is N. M and N. The difference of the height is as usual. पहले ऐसा ही है. ये जो height difference है, ये H का है. The density of the liquid is rho, as usual. But the whole container is accelerated upward now. This whole container is accelerated upward. What could be the pressure difference now? Pn minus Pm. Or are you agree with the pressure at the point N is larger than the pressure at the point M in this situation too? Yes, sir. Okay. So again, the pressure at the point N should be larger than the pressure at the point M. So we have the Pn minus Pm. But what was this? Is it simply rho GH or something different? Different. It should be different. So what was the difference here? G It is the plus rho G effective, yes, of course. G effective or into H. And here the G effective means G plus A. ये G effective हम पहले वाला जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लेकर के आते थे वही है. Actually we are talking about the fluid mechanics. ये वही है, फोर्स का लॉ जो पहले है ना वही अप्लाई करना है. It's a fluid mechanics. मैकेनिक्स को ही बिल्कुल मैकेनिक्स को फॉलो अप करता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो अप करेगा ये सब कुछ.
तेज। तो हेयर जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास मालूम है भाई, जी इफेक्टिव इज दिस वन, जी प्लस ए। तो फाइनली द पी एम माइनस पी एन माइनस पी एम इज इक्वल टू रो जी प्लस ए इंटू एच, ऐसे होना चाहिए। So, और हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हम इस रिजल्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स के फॉर्म पे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? यू नीड सम आइडिया रिगार्डिंग दैट वन। तो मैं एक आइडिया देता हूं यहाँ पे, जस्ट टू जस्टिफाई इट। सूडो फोर्स लगा के हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज आ जाए। चलिए, जस्टिफिकेशन कुड बी लाइक दिस वन। जीरो फोर्स की बात हम कर सकते हैं अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करेंगे तो, यानी कि विदाउट जीरो फोर्स एंड विद जीरो फोर्स, दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। जीरो फोर्स जस्ट टेक्निक। तो पहले मैं विदाउट जीरो फोर्स ही आपको बताऊंगा। दिस इज द वाटर समथिंग, एंड अगेन वी हैव द 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है एम एंड अनदर पॉइंट इज एन। अगर हमें उस पी एन, और दिस इज एक्सलेटेड, ओके, ऑफ कोर्स it is accelerated vertically up. So with respect to the earth, it is accelerated. Means frame of reference is here. यहाँ पे है frame of reference. Frame of reference. F(R). This is the frame of reference. F dot R. F(R). So it is the ground. Unaccelerated frame. Frame of reference कैसा भाई? Unaccelerated. Unaccelerated. Or inertial frame of reference. What do you want to say? Inertial frame of reference. इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा जो लिक्विड पार्ट है ना यहाँ पे, जो जस्ट इमेजिन अ लिक्विड पार्ट ओवर यहाँ पे, चलो इमेजिन करना है ना, यहाँ पे एक लिक्विड पार्ट इमेजिन करो जिसका एक पॉइंट एन हो, एक पॉइंट एम हो, एक बॉडी, एक इमेजिनरी बॉडी को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे एक इमेजिनरी बॉडी को कंसिडर करते हैं। ऐसे जिस एक ऐसा बॉडी इसमें दोनों पॉइंट आ जाए। आई थिंक हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले लेते हैं, इमेजिनरी बॉडी जो फ्लूइड, इसी फ्लूइड से बना हुआ है, ये भी उसी रो से बना हुआ है जिससे ये बना हुआ है, सेम। क्योंकि ये पार्ट एक्सिलेटेड है, ये भी पार्ट एक्सिलेटेड है, होल बॉडी इज एक्सिलेटेड। सिंस हम इसको मैकेनिक्स में कंपैरिजन करना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, तो वी हैव टू कंसिडर अ इमेजिनरी बॉडी। तो चलो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज द इमेजिनरी बॉडी, और इमेजिनरी बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। कैन वी चेंज द कलर हियर? थोड़ी डीप, ठीक है। हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी बॉडी को कंसिडर कर लिया, जिसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लेट्स टेक द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इज ए। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इनका हाइट तो एच ही है ऑब्वियसली।
एंड ऑब्वियस ये है क्या भाई, इट इज द इमेजिनरी पार्ट, imaginary part of the body, part of the fluid. Okay. अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है इस पे कोई फोर्स लगने वाला है, जो 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 लिक्विड यहाँ पे है ना वो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जो लिक्विड यहाँ पे उस पे नीचे की तरफ से फोर्स लगाएंगे। अगर यहाँ की प्रेशर, अगर यहाँ के मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का प्रेशर PM है और यहाँ का प्रेशर PN है, तो कितने फोर्स लगेंगे? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पे तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगने वाले हैं, ये देखो ऐसे लगने वाला है, और मैं इस फोर्स F को बोल सकता हूँ FN, इवन मैं FN का नाम वैल्यू बोल सकता हूँ, इट इज द PN प्रेशर और इनटू द एरिया A। कौन सा एरिया भाई? दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड इन द सिमिलर फैशन वी हैव अनदर फोर्स, एक और फोर्स लग रहा है जो ऊपर से लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कम होगा क्योंकि प्रेशर भी यहाँ पे कम है, तो एक स्मॉल एरिया, स्मॉल एरो मार्क मैंने यहाँ पे ले लिया इसके मुकाबले में, एंड दैट इज FM। But what is this FM? We will say it is the PM into area of cross section once again. और एक और फोर्स है जो इस इमेजिनरी बॉडी पे लग रहा है, and that is its own weight. Its own weight. तो इसका वेट क्या होगा भाई? What about this weight? एक और फोर्स है, इसको बोलेंगे weight of the body, W. And what about this W? Means mass M into G. What is the mass? Volume. Volume is what? A into H into density rho into G. वॉल्यूम कितना हो गया भाई? ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी हो गया, मास बन गया, और G से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया। एंड द होल बॉडी इज नाउ एक्सेलरेटेड। तो देखो यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे इमेजिनरी बॉडी इमेजिन कर लिया। अब तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल तरीके से हमने देख लिया। वंस अगेन कैन बी यूज हियर सेम डायग्राम हियर। ऐसे लग रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, ऐसे एक बॉडी है, और ये बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहा है उसकी फोर्सेस की वजह से बस ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपवर्ड एक्सेलरेटेड है। जो जो फोर्स लग रहे हैं इस पे हमने दिखा दिया कि यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लग रहा था, ऊपर की तरफ लग रहा था, एक फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा था, और एक mg है जो नीचे डाउनवर्ड लग रहा था। तो ये इनके हमने FBD बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। हमने इस फोर्सेस को बोल दिया, इट इज द फोर्स FN। FN इज इक्वल टू व्हाट? इट इज द PN इनटू एरिया A, and this FM is equal to what? PM into area A. Once again, FM, this is M, this is N, PM into area, और mg हमें ऑलरेडी दिख ही रहा है, W A H rho into G। So this is the fluid mechanics. We are just talking about the fluid mechanics. मैकेनिक्स जब भी आता है नाम तो न्यूटन्स लॉ याद आता है। न्यूटन्स लॉ, F net is equal to mass into acceleration net। जिधर एक्सेलरेशन हो उधर प्लस साइन ले लेते हैं भाई। ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज नेगेटिव। ऑफ कोर्स है डाउनवर्ड ले सकते हैं भाई। जिधर एक्सेलरेशन हो उधर कौन सा साइन ले लेते हैं? हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन प्लस, सो अपवर्ड इज पॉजिटिव हियर, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, and this downward is also negative. So we can so simply just make an idea दे रहा हूँ कि how to justify the relation। हमने relation already देख चुके हैं, relation is PN minus PM। अब बड़ा ही सिंपल था, if you don't justify तब भी आपको ये रिजल्ट, मतलब आपका माइंड इसको जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। बट could you prove that? Yes, you can prove that। ऐसा प्रूव कर सकते हो by Newton's law of motion।
Let's do it. क्या लिखते हैं? By fluid mechanics क्या लिखेंगे हम? F net is equal to mass into acceleration, of course. नेक्स्ट पेज में हम आगे कर लेते हैं इसको. F net is equal to mass into acceleration. मास की वैल्यू में पता है, वेट mg है. mg तो m के जगह पे क्या स्टैंड कर रहा है हमें दिख रहा है. दिस इज द मास m, दिस इज द मास, दिस इज द मास. अभी लिख लेते हैं यहाँ पे. सो बाय न्यूटन्स, यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है? ऑब्वियसली द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात आता है तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ही हमारे माइंड में आता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है. एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्शन लिखना है. एफ नेट में क्या रहा है? नीचे वाला फोर्स क्या था? पी एन, एफ एन, सॉरी एफ एन, और माइनस में क्या करना है? एफ एम. माइनस में और क्या करना है? वेट डब्ल्यू एंड इज इक्वल टू मास एम इंटू ए. एफ एन के जगह पे क्या लिखना है? पी एन इंटू एरिया. एफ एम के जगह पे क्या लिखना है? पी एम इंटू एरिया. डब्ल्यू के जगह पे क्या लिखना है? ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी. और एम के जगह पे लिखना है ए इंटू एच इंटू रो और एक्सेलरेशन है एस. ये सभी में है ए हट गया, कैंसिल, एंड यू गॉट दैट पी एन माइनस पी एम इज इक्वल टू, वो इस तरफ आ जाएगा, इट्स रो जी प्लस ए और इंटू एच दोनों तरफ. यस, द सेम रिजल्ट इज देयर. So this derivation is just to give you some idea regarding your self justification, कि कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि पी एन माइनस पी एम यही होता है, यही है, यही होता है, ऐसे हो सकता है भाई. वी कैन जस्टिफाई इट. और सिंस हमने यहाँ पे अनएक्सलेटेड फ्रेम की बात किया था, इनर्शियल फ्रेम की बात किया था, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, the frame of reference is ground. That's why we don't talk about the pseudo force. pseudo force की बात तब करते जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे लेते? हम यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक्सलेटेड होता ना, तो इसके रेस्पेक्ट में अब इसका एक्सेशन नहीं दिखता, और यहाँ पे हम pseudo force ले तो सेम रिजल्ट कैन बी, तो सेम रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है. Isn't it? Is it okay? Yes, sir. Okay. तो ऐसे आगे चल करके जितने भी हमें कुछ भी डेरिवेशंस आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या करना है क्या, लेकिन कैसे जस्टिफाई करना है. तो एनीथिंग यू हैव टू जस्टिफाई, यू कैन टेक द इमेजिनरी बॉडी. इमेजिनरी बॉडी मीन्स द पार्ट ऑफ दैट बॉडी. अगर हम एक बॉडी के ऐसा इस पार्ट को जिसमें दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है तो हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल इमेजिनरी बॉडी को ले लेते हैं. If this part is moving, the whole body is also moving. If this container is accelerated, the whole body is also accelerated. This imaginary body is also accelerated. So it would be now easy to apply the Newton's law of motion, and this is the fluid mechanics. That's why it is also known as the fluid mechanics. Okay. So next. So similarly, what will happen when the acceleration of the elevator is vertically downward? I think you got the result. There is a result in your mind. Yes. When it is rho g minus a, of course, the g effective becomes g minus a. So just make the point here. And the similar fashion you can drive it. So no need of now further derivation, you can do it. So once again we have a container. And container is now vertically
downward accelerated. It is accelerated vertically downward. And the liquid is there. And again, we have the 2 points. One point is M, other point is N. तो फिर से हम बोलेंगे कि what is the pressure difference? Pn minus Pm. Your answer is rho G effective or into H. What about the H? The height, the difference, this H. And what about the G effective? G effective becomes G minus A. So simple. So Pn minus Pm is equal to rho G minus A into H. Yes, that's it. So simple to get it. हम बड़े आराम से इनको जस्टिफाई भी कर पाएंगे अब you so simple to get it. One thing, एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई अगर ये जो एक्सेलरेशन है, if acceleration becomes G, then what will happen? What would the pressure difference? अगर ये जो एक्सेलरेशन है वो G के इक्वल है तो फिर ये प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? Yes, you know the result. Zero. It becomes 0. Means there is no pressure difference at all. अच्छा, ओके, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, बट व्हाट अबाउट द प्रेशर? क्या प्रेशर भी नहीं होगा यहाँ पे? प्रेशर डिफरेंस तो नहीं होगा, वो तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ के प्रेशर वही होगा और यहाँ के प्रेशर भी होगा. That's why there is no pressure difference. But what about the pressure at the point N? ये यहाँ का प्रेशर ही नहीं होगा क्या? Is it the zero pressure? No sir, सिर्फ atmospheric pressure होगा. No, बिल्कुल exactly. There should be only atmospheric pressure. जैसे atmosphere, जैसे ये सब यहाँ पे हर जगह पे. So there will be the pressure, of course. There is a pressure, and that is the only atmospheric pressure. So we will make the point in D part. So this point is container is accelerated downward. Container is accelerated downward. उसके लिए कंडीशन हो गया. And D के लिए हम एक पॉइंट्स बना लेते हैं. Yes. For the free fall motion of the container. Free fall motion. हम इसे बोलते हैं ना free fall motion. जब container G एक्शन से नीचे आता है तो free fall motion of the container. So free fall motion of the container. All over there, the liquid is there. We have the 2 points, M, and another point is N. The difference is there. It is accelerating down, but A is equal to G. It is the free fall motion. So we can say what is the G effective? It is 0. What is the Pn minus Pm? You can say it is 0. Means Pn is equal to Pm. Yes. But what about this? So this is equal to P naught. P naught means P atmospheric. The P naught means
be atmospheric. Value is 1.01 10⁵ Newton per meter square. We can also say it 1.01 10⁵ Pascal. Okay.